Good afternoon, students. Today we are going to discuss about absorption and emission spectra. Students, earlier we have seen the dual nature of electromagnetic radiation, where we have seen that the electromagnetic radiation shows wave character also and particle nature also. Okay. So students, after having the idea of the dual nature of EM radiation, we are going to discuss about the absorption and emission spectra. So let us begin. Students, before going to the atomic and emission spectra, we must know about the Broglie hypothesis and also how the EM waves interaction takes place with matter. So students, when we are going to study about the Broglie hypothesis, firstly the question was there in the minds that do particles show wave-like character? So there was a question that is particles show wave-like character? क्या particles भी wave-like character show करते हैं? So for this students, it was said that yes, particle shows wave-like character, and it can be understood from the expression given by Broglie, where he has given that lambda is equal to h by p. Okay, where students this p is basically momentum. So we all know that p, that is momentum, is equal to mv. So we can convert lambda is equal to h by mv. Okay, and the students, where you can see that this m is the mass and v is the velocity. So both radiations and matter show dual nature. So from here it is clear that as radiations, similarly matter also possess the dual nature. Okay, that is the particle like and wave like. Now students, let us see how the EM wave interact with matter. Okay, how their interactions takes place. Students, whenever the radiations of any wavelength, okay, strikes on a body, what happens? It absorbed, it may be absorbed, it may be transmitted, it may be reflected. These three phenomena can be take place. Okay, so whatever light a body reflects, that determines the color of the body. So whatever color we are observing in a body, it is only because of the reflected radiation. Okay, so students, whatever light a body reflect, मतलब कोई भी body जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ओके, वही जो है डिटरमाइन करती है उस बॉडी के कलर को. सो स्टूडेंट्स, नाउ ऑनवर्ड्स द टॉपिक दैट इज एटॉमिक एंड एमिशन स्पेक्ट्रा स्टार्ट्स. सो स्टूडेंट्स, as we are going to discuss about spectra, so you must know the study of emission or absorption spectra is referred to as spectroscopy. So students, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, बेसिकली स्टडी करते हैं कि अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा के थ्रू. ओके, बेसिकली यहाँ स्टडी क्या होता है कि हम डिटरमाइन करते हैं एटम्स को, वो किन डिस्क्रीट लाइंस में हैं, उनके स्पेक्ट्रा क्या शो कर रही है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वाइट लाइट इंटरैक्ट्स विथ मैटर, जब भी स्टूडेंट्स वाइट लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है. ओके, एंड दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज बेसिकली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा. और ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी हो सकता है और एमिशन स्पेक्ट्रा भी हो सकता है. सो लेट अस सी बोथ ऑफ देम. स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें, सो व्हेन वाइट लाइट इंटरेक्ट्स विथ मैटर, द मैटर एब्जॉर्ब सम ऑफ द रेडिएशन and the spectra obtained due to the remaining radiation is absorption spectra. Okay, so what happens here students in case of absorption spectra, इसमें होता क्या है कि वाइट लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है और मैटर जो है कुछ पोर्शन ऑफ लाइट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो पोर्शन ऑफ रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब नहीं करता है. ओके, उनकी वजह से जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होती है उसको हम कहते हैं रेडिएशन, और बेसिकली उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ओके,
एंड टॉकिंग अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रा, हियर स्टूडेंट्स व्हाट हैपन, ये तभी ऑकर होता है जब एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में हो, ओके। एंड हम वो एक्साइटेड स्टेट अचीव कैसे कर सकते हैं? बेसिकली वी कैन एक्साइट ईदर बाय रेजिंग द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, और बाय मेकिंग लाइट इंसिडेंट ऑन इट, या हम उस पर लाइट को इंसिडेंट कर दें। सो इन दिस टू मैनर एटॉमिक एंड एमिशन स्पेक्ट्रा टेक्स प्लेस। You can see here students, look here, this is what the line spectrums. Students, basically line emission spectra are the great of interest in the study of electronic structures, okay. And because of this, basically the line spectra, or you can say the atomic spectra, the German chemist Robert Bunsen in 1811 to 1899 was one of the first investigator to use line spectra. जो जर्मन साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बंसन, इन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन किया एलिमेंट्स पे लाइन स्पेक्ट्रा को यूज़ करके, दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और स्टूडेंट्स कई एलिमेंट्स लाइक रुबीडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम और स्कैंडियम, ये सारे डिस्कवर्ड हुए हैं विद देयर मिनरल्स वर analyzed by spectroscopic method, okay. So students, in this manner you have seen that how these spectra takes place, that is the emission spectra and the absorption spectra. Now students, let us see that how the line spectrum of hydrogen can be seen, okay. So when we are going to see the atomic spectra or line spectra of hydrogen, basically what happens when an electrical discharge is passed through gaseous hydrogen, जब भी electrical discharge पास किया जाता है gaseous hydrogen atom के ऊपर, the H2 molecule dissociate and energetically excited hydrogen atom produced emit इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज। तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी डिस्क्रीट एनर्जीज होती हैं, ओके। एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज, और ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होती हैं इनमें सेवरल सीरीज होती हैं जो कि साइंटिस्ट के नेम पे डिस्कवर्ड हुई, या तो मतलब जिन्होंने उन्हें डिस्कवर किया उनके नाम पे आई, जैसे बामन, लाइमन, पाशन। बाकी और भी सीरीज आई जैसे ब्रैकेट और पी फर्म। हाइड्रोजन के केस में हम देखते हैं लाइमन, बामन, पाशन सीरीज। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट दिस सीरीज बेसिकली आर। सो स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट बामन सीरीज, अगर हम बामन सीरीज की बात करें, सो स्टूडेंट्स हियर व्हाट हैपन्स, बामर that is a scientist, so in 1885 on the basis of experimental observation that if spectral lines are expressed in terms of wave number, तो बामन ने देखा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया और इन्होंने देखा कि अगर हम जो ये लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनको हम वेव नंबर के सेंस में, दिस इज़ द सिंबल ऑफ वेव नंबर, अगर हम इसको वेव नंबर के सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्होंने एक फार्मूला दिया वेयर ही हैज़ गिवन दैट वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, where n is an integer equal to or greater than 3, that is n is equal to 3, 4, 5. The series of lines described by this formula are called as Baman series. तो इस फॉर्मूले से जिन लाइंस को डिस्क्राइब किया गया उसको हमने क्या कहा, बामन सीरीज कहा। Students, one more thing what you have to see is that the number that you are seeing here is basically the value 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड द रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। एंड द फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ द लाइंस दैट करस्पॉन्ड टू n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 आर, सो इफ द सीरीज इज हैविंग n इज इक्वल टू 1 then it is Lyman, n is equal to 2 then Baman, n is equal to 3 then Paschen, and keeping the values here you can see here for Lyman it is 109677 centimeter inverse bracket 1/1 square minus 1/n square. For Lyman it is 1/2 square. For Paschen it is 1/3 square. For bracket it is 1/4 square. For P fund it is 1/5 square. Okay, so Rydberg given a formula which is expressed as 1/lambda is equal to RH 1/n1 square minus 1/n2 square, where RH is basically the Rydberg constant. Okay, so now students, let us see
that how this series, that is the Lyman, Barman, Paschen and Bracken and P Fund series are shown. Okay, so the hydrogen spectrum shows the Lyman, Barman and Paschen series of transition for hydrogen. Let us see how these series are shown. So you can see here, students, in this diagram, this is the transition of electron in the hydrogen atom, and basically it shows the Lyman, Barman and Paschen series. ये जो है ये Lyman, Barman और Paschen series को दिखा रहा है. तो student, you can see here is the Lyman series, this is the Barman series and this is the Paschen series. Okay, so students, basically there are certain features, okay, which are common to all line spectra, as if the line spectra for each atom is different, but there are certain features which common to all spectra. The very first is that the line spectra of element is unique. कोई भी element है उसकी line spectra क्या होती है, unique होती है. The second is there is regularity in the spectrum of each element. हर एलिमेंट के स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक रेगुलरिटी देखने को मिलती है. एंड स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट देम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, वेयर वी हैव सीन about the atomic and emission spectra and also about the series corresponding to the atomic spectra of hydrogen, where I have seen about the Lyman, Barman and Paschen series. Okay, thank you.